Hi everyone, I hope that you all are doing good. So in today's session we will solve this question number 5 of exercise 1.3. Okay, question number 5 is stating students that you have to find the product using suitable property. So all the properties that I have already explained you might be having it in your mind. Okay, we are basically having 4 types of properties: closure property, commutative property, associative property and distributive property. That all I have explained you, but no problem is there. Wherever it will required, I will explain you from the beginning only. And one more suggestion students, एक और मैं सलाह देना चाहूँगा, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज़ को दिमाग में लाओ ही मत. सिंपली आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ दिमाग में आएंगी. देन इफ़ सपोज यू आर नॉट वेल नोन अबाउट दिस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी, देन यू विल फील इट डिफ़िकल्ट कि मुझसे कैसे बनेगा, हाउ विल आई सॉल्व दिस क्वेश्चन. ऑल दोज notorious and nonsense questions will come in your mind. So better you avoid the name of the properties only. Okay, simply we will solve these questions. See, starting from question number 1. See, this is the very first segment A. Okay, now in A segment we are having 26 into minus of 48 plus minus 48 into 36. Now basically if you will observe this question minutely students, we are having 2 terms. Okay, the very first term is this one and second term is this one, and in both the terms this 48 is common, minus 48. ओके, यहाँ पे बेसिकली 2 ही टर्म है स्टूडेंट्स, बीच में मल्टीप्लिकेशन प्लस का साइन है. ठीक है, एक टर्म ये हुआ, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये एक ही टर्म मिलने वाला है. सिमिलरली इसे भी मल्टीप्लाई करने के बाद एक ही टर्म मिलने वाला है. बेसिकली इसमें 2 ही टर्म है और दोनों भी टर्म में ये माइनस 48 हमारा कॉमन है. ठीक है, तो ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल होगा. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि a इज इक्वल टू बी प्लस सी. ये मैंने आपको सिखाया था कि ये अगर a से तोड़ेंगे, ये a को अंदर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा दोनों भी टर्म से. इट विल गेट मल्टीप्लाइड फ्रॉम all the terms inside the bracket, that is a. First it will get multiplied, that is a into b, and then plus sign as usual, and then again a into c, like this I told you. So this is distributive property, nothing else, है ना. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस 48 फॉलोड बाई इक्वल टू साइन, है ना स्टूडेंट्स. माइनस 48 को कॉमन ले लेंगे. यहाँ पे क्या बचा 26. ठीक है, बट बिग ब्रैकेट लेंगे. यहाँ पे क्या बचा प्लस, एंड देन अगेन यहाँ पे माइनस 36 हमारा बचा. ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस 48 एज इट इज ब्रैकेट के अंदर जो है उसे सॉल्व करेंगे. तो माइनस यहाँ पे 26 एज इट इज प्लस माइनस माइनस 36. ठीक है, सिंपल है, सिंपल. ये 48 को कॉमन लिया मैंने, बाकी सेम सॉल्यूशन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हूँ. ठीक है, अब यहाँ 48 एज इट इज. नाउ दिस इज एडिशन ऑफ इंटीजर. two integers are there, one positive one negative. So in this case basically we are subtracting and considering the sign of greater number. इसमें हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं बड़े नंबर से छोटे नंबर को, और बड़े नंबर का साइन को हम कंसीडर करते हैं. ठीक है, सो 36 minus 26 we will get 10, and 36 is greater and its sign is minus, hence in the result we will have minus 10. Now here we are having multiplication of integer, that is 2 integers we have to multiply. So 48 into 1 we will have 48, and then we will place this 0. Now sign, so minus into minus will give you plus. Similarly all the questions will be solved students. Okay, now coming to B, see here, this B is nothing but basically it is associative property, or you can say commutative property. Both are dealing with change in order of the numbers. Okay, तो यहाँ पे क्या करना है, forget about the property. Better I told you, forget about the property. What we will do, we will simply focus on the solution of the question. What we will do, हमें क्या करना है कि इन तीनों नंबर को इस तरह से पेयर अप करना है, इस तरह से इनके प्रोडक्ट को मतलब फाइंड करना है कि वी कुड मैनेज टू गेट मोर नंबर ऑफ जीरोज. व्हाई आई एम टेलिंग यू टू मैनेज टू गेट मोर नंबर ऑफ जीरोज? वी नो दैट if we are having zeros
in finding out the product, then we are finding that product very easily. Like suppose here we were having 48 into 10, so simply we multiply this digit into 1, that is 48 1 ja 48, and then I place here 0. Similarly, suppose I would have to find 48 into 100, so again 48 1 ja 48, now I will place 2 zeros. So like this, when we are having more number of zeros, then there is no complication in doing the calculation, and the calculation is very easy. That is why I am telling you to pair up the numbers in such a manner to get more number of zeros, है ना. तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अभी यहाँ पे 8 है, इसके वंस प्लेस पे 3 है, इसके वंस प्लेस पे 5 है. हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वंस प्लेस को पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना. लाइक सपोज इफ आई हैव टू मल्टीप्लाई 125 इंटू 53, तो दीज टू नंबर्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड फर्स्ट ना. तो हम देखेंगे कि वंस प्लेस पे 0 आ रहा है या नहीं. कैसे देखेंगे, वंस प्लेस के नंबर को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, पूरा नंबर को मल्टीप्लाई करते नहीं बैठेंगे ना. इफ़ वी विल मल्टीप्लाई द होल नंबर, देन इट विल लॉट्स ऑफ टाइम विल बी वेस्टेड, है ना. तो हम क्या करेंगे, ओनली वंस डिजिट, द डिजिट विच इज प्रेजेंट एट वंस प्लेस, वी विल मल्टीप्लाई ओनली दोज डिजिट एंड वी विल सी, वी विल एग्जामिन, okay, whether we are getting 0 or not. If we are getting 0, okay, then we will pair those two numbers. If we are not getting 0, means we need not to pair those numbers. हम अगर उसे फिर भी पेयर करते हैं तो हमारा मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा थोड़ा, ठीक है, होगा. बट हमें क्या करना है, काम को स्मार्टली करना है ना. क्या करना है, स्मार्टली करना है. तो यहाँ पे देखो, अगर हम ये दोनों नंबर को पेयर अप करना चाहते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो नाउ फर्स्ट वी विल एग्जामिन वेदर वी आर गेटिंग 0 और नॉट. तो 5 3 जा 15, मीन्स द डिजिट एट वंस प्लेस वी आर गेटिंग 5, वी आर नॉट गेटिंग 0, so this is not correct pairing. Now we will pair this one and this one, okay. Now suppose I have to pair this one and this one. So suppose here the digit at ones place is 8, here the digit at ones place is 3. So 8 3 is 24. Again we are having the digit at ones place is 4. I hope you are understanding students. ठीक है, अभी भी मुझे 0 नहीं मिला, यानी ये दोनों को हम पेयर नहीं कर सकते हैं, ये दोनों को हम पेयर नहीं कर सकते हैं. Now third combination, let us go for third combination. Now let us examine this one and this one. Now what we will do, ठीक है, अब क्या करेंगे, here is ones place digit is 8, here ones place digit is 5, so 8 5s are 40. Now we managed to get 0 at ones place, so our combination is this one into this one, and this is all about associative property. It is dealing with the change in order of the number. Means हम अगर order को change करते हैं, if we are changing the order of the number, then also our product or whatever calculation is required, it is not getting altered. Okay, so here we will multiply these two numbers. 125 into 8, 8 5s are 40, 8 2s are 16, and 16 plus 4 again 0, 8 1s are 8, and then 2 10 again 0, means you will get 1000. And if you will multiply 1000 into 53, you will get, again it will be very easy. So let me show you the calculation students. The calculation is very easy. I hope that now you understood it. So combination is like this one. So equal to 8 into minus 125 into 53. We will write like this. Okay. Now if you will multiply them, then you will get 1000. Okay. Now here is minus and here is plus. So minus plus will get minus into 53. Now 53 into 1. So we will have here 53. And how many zeros are there, students? 3 zeros. So we will write here 3 0. Now here minus and here is plus. So minus into plus, again we will have minus. So finally we will have minus 53. See, without doing any calculation, very big or burden of calculation, I found it very easily. How?
by managing how to pair the numbers so that we could get more number of zeros. बस हमें यही ध्यान में रखना है कि कैसे पेयरिंग करें कि ताकि हमें ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोज मिल सके. ठीक है, अभी नाउ आई विल शो यू सम मोर क्वेश्चन स्टूडेंट्स. सी लाइक सपोज क्वेश्चन नंबर जी. व्हाट इज देयर इन जी? -17 into -29. -17 into -29. Now here if you will see the numbers students, see here we are having 7 at ones place, here we are having 9 at ones place. So 9 7 ja 63, we are not getting 0. Now what to do here? Here better we will change any one of the number which could involve 0 in it. ठीक है, 0 को इन्वॉल्व करना है और ऐसा हमें मैनेज करना है कि ताकि हम 0 को वहाँ ला सकें. कैसा? जैसे कि इक्वल टू, नाउ वी विल कीप दिस 17 एज इट इज़, वी विल चेंज इट टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में चेंज करेंगे. नाउ -29 इज देयर. ओके, सो इफ आई राइट हियर -30 + 1, instead of writing -29, if I will write here -30 + 1, then also after solving these two, what I will get? -29 only na. See, addition of two integer, one is positive, one is negative, we will subtract it. So 30 - 1 29. 30 is greater, sign of 30 is minus, and hence we will get -29 only. So मैंने क्या किया, इस 29 को इस फॉर्म में तोड़ दिया. अब क्या हो गया, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन जो है, ये पूरा प्रोडक्ट जो है वो किस में आ गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में. नाउ फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई दिस टू एंड देन वी विल मल्टीप्लाई दिस टू. सो -17 into -30 प्लस साइन एज इट इज अगेन -17 into 1. सो हियर माइनस माइनस, और यू कैन से 17 3 is 51 प्लस 1 0. नाउ माइनस इंटू माइनस विल गिव यू प्लस. Here plus as usual, -17 into 1 you will get -17. Okay, now plus minus will change to minus, and then after solving this you will get the final result. So I hope that you can solve this question number 5 students very easily. Rest of the calculations are also very easy and I hope that you will do it as homework.